नमस्कार, मैं हूं आयुष्मान खुराना। एनडीटीवी डिटॉल के इस बेहद खास कार्यक्रम बनेगा स्वस्थ इंडिया में आपका स्वागत है। 10 साल से, जी हां, 10 साल से एनडीटीवी और डिटॉल मिलकर ये मुहिम चला रहे हैं। हर साल एक नया लक्ष्य, हर साल एक नई थीम। वैसे मेरा सौभाग्य है कि जो काम हमारे समय के महानतम अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन किया करते थे, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जी का अभिवादन करूं और भरोसा दिलाऊं कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर हम चलते रहेंगे और पहुंचेंगे उस मुकाम तक जिसे उन्होंने नाम दिया है लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का। बीते 9 सालों में हमने बहुत सारे लक्ष्य हासिल किए। हाइजीन पर काम किया, स्वच्छता की पाठशाला लगाई, अपने आसपास के 10 गज को साफ रखने की शपथ ली, स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर बढ़े। बीच में कोविड जैसी चुनौती आई जिसने सारी दुनिया को रोक लिया था, लेकिन हमारी मुहिम फिर भी चलती रही। बनेगा स्वच्छ इंडिया, बनेगा स्वस्थ इंडिया में बदला। हमने डॉक्टरों का सम्मान किया जो कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने में लगे रहे। आज़ादी का अमृतकाल में हमने तय किया कि किसी को पीछे छूटने नहीं देंगे। हमने एक धरती, एक परिवार, एक स्वास्थ्य की बात की। ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इन वर्षों की इतनी सारी मेहनत का फायदा 2 करोड़ 40 लाख बच्चों तक पहुंचा। ये छोटी बात नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, उस महात्मा का जन्मदिन जिसके छू लेने भर से गुलाम सोया भारत जाग उठा था। महात्मा गांधी ने हमें एक नई सभ्यता का मंत्र दिया, वो सभ्यता जो अधिकतम सादगी और सफाई के सहारे चलती है। ऐसी सभ्यता जो मन और शरीर दोनों से स्वच्छ रखती है, स्वस्थ रखती है। हम गांधी जी के बच्चे हैं और उनकी सिखाई हुई राह में हमें आधुनिक समय की बहुत सारी बीमारियां बचाती हैं। तो महात्मा गांधी को याद करते हुए हम शुरू करते हैं अपने 10वें साल की मुहिम 10 का दम। हम देखेंगे कि पिछले 9 साल में हमने क्या हासिल किया है, इसके सबक क्या हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक हमने जाना है। 10 का दम में वो 10 कदम शामिल हैं जो हमने उठाने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज गांधी जयंती के परम पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ। महात्मा गांधी के जीवन से तथा उनके विचारों से व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आध्यात्मिक सुधार की अनगिनत शिक्षाएं मिलती है। गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता के अभाव में स्वराज सार्थक नहीं होगा। स्वच्छता को वे शारीरिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक सुचिता के लिए अनिवार्य समझते थे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इस महत्वपूर्ण कथन का गांधी जी अक्सर उल्लेख किया करते थे। पर्सनल हाइजीन के महत्व के बारे में गांधी जी से जुड़े एक संस्मरण को साझा करना मुझे अच्छा लगता है। एक बार गांधी जी ने कस्तूरबा से बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करने का आग्रह किया। कस्तूरबा ने पूछा कि वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, बच्चों की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। किसानों के बच्चों को इकट्ठे करो, उनके आंख दांत देखो, उन्हें स्नान कराओ, सफाई की आदत डालो। ये कम शिक्षा नहीं है। बच्चों में स्वच्छता का संस्कार पड़े और उन्हें संतुलित आहार मिले तो पूरी पीढ़ी स्वस्थ होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की निर्माण की दृष्टि से अनेक अभियान चलाई है तथा उन्हें जन आंदोलन का रूप दिया है। हाल ही में 27 सितंबर के दिन में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड सेरेमनी के लिए इंदौर गई थी। वहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगा हुए थे जिन पर लिखा था, स्वच्छता का आनंद लीजिए, आप इंदौर में हैं। मुझे इंदौर के सामान्य निवासियों की स्वच्छता के प्रति निष्ठा के उदाहरण भी सुनने को मिली। मैं चाहूँगी कि मीडिया के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छे उदाहरण से लोगों को अवगत कराएं। ऐसे प्रयासों से जन जागरूकता बढ़ेगी और व्यवहार परिवर्तन भी हो सकेगा। मैं निरंतर 9 वर्षों से बनेगा स्वस्थ भारत वार्षिक कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आप सबकी सराहना करती हूँ और 10वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि हाइजीन और न्यूट्रिशन से जुड़े आपके कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में
बच्चों तक अपनी पहुंच बनाए हैं। जब हमारे देश हेल्थ और हाइजीन के और अधिक प्रभावी मानक प्रस्तुत करेगा तब वन वर्ल्ड हाइजीन के संदेश से संपूर्ण विश्व समुदाय को भी प्रेरणा प्राप्त होगा। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि बनेगा स्वस्थ भारत अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे तथा देश की विकास यात्रा में सार्थक योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We started with 5,000 schools, and today we are in 9 lakh schools. We have had programs which deal with diarrhea, which deal with malaria, which deal with malnutrition. We are making climate resilient schools. We are making hygiene parks. We are holding Olympiads which have 2 crore children participating. I could never have thought we would have done this in the last 10 years, and I must say I really want to thank our partners. I think a lot of them are sitting here and who will be on stage. But first of all, thank you NDTV. I think you have been with us all of these 10 years, and some of you have been around for all of them. Ambika, Sanket, Manika, Rachna, a lot of them. And thank you for that. I think thank you to all the partners. I think we couldn't have done it without the expertise that they bring, without the knowledge, with the foot soldiers on the ground that they do this for us. It's been amazing. I feel so proud, and I look forward to the next 10. And I would not end before just welcoming Ayushmann to our family. Great to have you, sir. Let's move on. Joining us now is Reckitt CEO Chris Litt. At Reckitt, our sustainability work spans 3 key areas, each focusing on a different range of social and environmental challenges and ambitions. Purpose-led brands, healthier planet, and a fairer society. Purpose-led brands means we're using the power and reach of our brands, products, programs, and partnerships to have the biggest possible impact on the world's most urgent social and environmental challenges. Every time a consumer takes one of our products, like Dettol, into their home, they're putting our purpose into action. Thinking about a healthier planet means recognizing the connection between healthy people and them having a healthy community to live in. Working towards a healthy planet means we need to tackle climate change, protect biodiversity, conserve our use of water, and, where possible, reduce our carbon footprint. पहली बात तो ऐसी है कि हमारी सोसाइटी की देश के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और प्रदूषण के कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसके बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जो अध्ययन किया गया, ये प्रदूषण से हमारी ज़िंदगी 10 साल कम हो रही है। और इसलिए मेरा सुझाव ये है कि महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और मोदी जी ने इसको बहुत बड़ा वजन दिया, तो अब हम लोग कचरे में हम लोग वैल्यू क्रिएट करें। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। एंड नॉलेज टू वेल्थ ये जैसे हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक इम्पॉर्टेंट है, वैसे वेस्ट टू वेल्थ। नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं 2 अनुभव आपको बताता हूँ. मथुरा का 90 mld स्लज हमने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट लिया. 40% सरकार ने दिए, 60% उन्होंने इन्वेस्टर लगाया. मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और वो 90 mld स्लज को शुद्ध करके वो पानी इंडियन ऑयल को दिया, रिफाइनरी को. वो 20 करोड़ साल के दे रहे. प्रोजेक्ट पूरा हुआ, यशस्वी हुआ. और 2 अक्टूबर के लिए हमने इस बार संकल्प किया है कि हम लोग जो सॉलिड वेस्ट है वो रोड में यूज़ करने के बारे में पूरे देश के लिए एक पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि देश का पूरा कचरा सेग्रीगेट करके हम रोड में लाएंगे. Do stay tuned for a scintillating performance by Neha Kakkar, the singer who is one of India's most followed stars on social media. Stay with us.
Thank you very much, Mr. Sangma, for joining us and speaking to us. So first of all, thank you so much for having me on the show. And this is a new chapter in one sense because you have started the health aspect this year. And it's very crucial because health is, of course, one of the most important social sectors for any government to provide to the people in the society. But Meghalaya, of course, being a very difficult terrain, we have different challenges compared to other parts of the country. First of all, of course, remoteness. Our villages are very, very remote. Number two, in large infrastructure. So we have a large number of villages, and hence we need large number of infrastructures, sub-centers, PHCs, CHCs. So for that also, in the last 5 years, since we've been in the government, this is our second term, we have been focusing a lot on improving the overall infrastructure to the grassroots level. Third, and the very most important part is the manpower. We have had a huge shortage of doctors, but in the last 5 years, we have reformed the overall recruitment process by coming up with recruitment boards that will allow the recruitment of doctors in a very, very swift manner. So we're going to be talking about a self-care kit, and this is what this campaign talks about. Creating self-care is one of the main things of our program. India is a culture of diversity. It's like we have to reach out to last mile population. It's all about starting very young. When we talk about, that the mother is a high-risk pregnant woman, how does a mother become a high-risk pregnant woman? The mother become a high-risk pregnant woman because she is anemic since ages, maybe when she was just a girl or adolescent, right? And there are no such facility or no such, person in the family who knows about it and who can guide the mothers. So that's how we devised the self-care kit, which will not just take care of the under 5 kids and prevent them from diarrhea and pneumonia, but also ensure that mother have that agency and mother takes care of herself so that she becomes more enabled to take care of the kid and the family. So let's see what the kit has, and Ravi, if you could also tell us why are these things important, so please. Yeah. So interestingly, Ambika, this all came from our work, what we have been doing in Amravati and Nandurbar. And I remember our, season 6, where with Mr. Fadnavis, who's Deputy CM of Maharashtra, we made a commitment. And we said, we are going to make sure the tribal kids will be taken care of. After delivering the program successfully with Plan India, we thought now it's the time to expand the program to various states in India. This kit is being divided into 2 parts largely. One part is for the mothers and the second part is for the kids. So for the mothers, this kit has iron and folic acid tablets, it has vitamin C, it has sanitizers, it has a baby blanket, it has a Dettol liquid soap. For the kids, it's taking care of the diarrhea and pneumonia both. It has the ORS sachets, zinc tablets, thermometers, soaps, amoxicillin tablets, surgical gloves, and the pulse oximeter. Basically, we would love to have these kids, placed in the wellness centers, in the Asha centers, in the Anganwadi centers. We really want to move up. We really want to support all the 100+ aspirational districts what India has. And this is our firm commitment, along with Plan India. We're going to take it to the last mile. We've been talking about the campaign's partners, and there have been many who have been integral to our 9-year journey. A journey that has been as meaningful as it has been impactful on the ground. Whether it was raising rupees 281 crores to make toilets in villages in season 1, to the launch of the hygiene curriculum for schools and learning institutes across India. The Reach Each Child program and the cadre it has created of health workers called Gulabi Didis. The first 1000 days kit, the impact of the Birds and Bees program, the tree plantation drives, the launch of the climate resilient schools, the Diarrhea Net Zero program which we just saw. There is a lot that has been done. I think this Swasth Banega India has been 9 years over now, going on to the 10th year. I think this was one of the first programs which linked the importance of hygiene to health. I think one of the very first programs we brought into light. At that time, the Swachh Bharat program had started, and Dettol had the Dettol Banega Swasth India program. So this program evolved out of that. So it was the health impact that we wanted to see of these programs. On one side, the Dettol Banega Swasth India, which had started already. I think this was a very innovative approach
one of the first very bold ones to have linked for the first time. Later on, a lot of health-related studies have been going on, but I think this was one of the first when Swachh Bharat started. The awareness, there is a two aspect of learning. One is awareness, and Gauravji also touched upon that, behavior change. We have created awareness, but there need to be a behavior change in people, and it takes time. I tell you my experience, I have seen now कि धीरे-धीरे करके लोग भूलते जा रहे हैं. Hand hygiene is a simple thing, but people are forgetting because COVID over, as if every disease is over. Disease कहीं नहीं है, हमारे पास में, हमारे साथ में है, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो infectious diseases are most common thing which we have seen. Diabetes, hypertension are there, but common diseases जो है अभी भी infectious disease हैं, and only prevention is the cure. I think when the Honorable President spoke in the morning, I think she took up the issue of Mahatma Ji emphasizing educating young children, and I think that sort of set the tonality for this morning, that for the future, we need to really not only understand that children are recipients of communication, and here I want to sort of add another point, they can be change actors. I think that is the most significant point. When we talked about ban on firecrackers, no plastic, who made that change happen? Young kids. Under school hygiene education program, we are using different tools, art and culture, in educating the children on hygiene messages. For example, the puppet show. Using the puppets, we can instill a habit of hygiene behaviors and messages long-lasting among the children. That way, we are creating a lot of hygiene awareness among the school children. Also, apart from art and culture, we are also using hygiene songs. In addition to that, we are also educating the children as child-to-child approach is our major program in our school hygiene education program. And through child-to-child education, the children are acting as ambassadors of change. Our leadership invests very heavily to make sure the program leaves no one behind. And today, the program is also going to witness something very interesting. You may have heard about the Langas, which is a song genre in Rajasthan. So we have Rais Khan, we did a Rais Khan project with him, and it's on Spotify. And in all the schools across Rajasthan, all the public schools, private schools, that song is played on the very, very regular intervals. It's a part of the Smart Schools program and Atal, school program. In the similar way, in the states like Tamil Nadu and Pondicherry, we launched our song album with NDTV and with Hindu 6-7 months back. Yeah. So in this way, we are doing some culturally adaptive messaging, and we are trying to take care of the social norms, and we are ahead of the game as of now.